जे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹਨ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ। तो जवाब जो नेत्र बंद करके अंदर ध्यान लाना, वो जवाब है कि महाराज जी का शुक्राना कर, कि महाराज जी का शुक्राना करना है। नवी संगत जी सन पता मुश्किल है, पर बाहर नेत्र खोल के रखने नाल कोई फायदा नहीं होना। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। I was asking why we all are here. Why we all are here. And I know that each and every one of us has many answers. But there is actually one answer, one reason. The other reasons are just branches of that reason. And the reason that we are here is to pay our gratitude to our Creator. Gratitude. जिन्हों महाराज जी कहते जपजी साहिब विच आदेश ते सह आदेश। I bow down to him, I bow down to him, I bow down to him. Why? In gratitude. When we bow down to somebody, it is in gratefulness to that person. Otherwise, our mind can never bow down to anyone. We are here to bow down to him, to recognize his blessings and thank him. Gratefulness, gratitude, in gratitude I bow down to you in gratitude. Ades te se ades, ades te se ades. Ades te se ades, ades te ade anile anade anat, jug jug eko ves. Ades te se ades, ade anile anade anat, jug jug eko ves. Ades te se ade anile anat, jug eko ves. Ades te se ades, ade
इस पौड़ी विच महाराज जी दसदे कि इन्हां गल्लां दा करके बहुत गल्लां आपां नूं दसदे कि अदा करके शुकरान कहंदे भुगत ज्ञान दया भंडारन कट कट वाजै नाद। भुगत ज्ञान महाराज जी कहते जदों ज्ञान हुंदा, जदों पता लगदा सच दा, जदों पता लगदा कि मैं हड्ड मास दी बनी देई नहीं हाँ, मैं एक होर चीज़ हाँ, पता नहीं कौन हाँ, पर जो बोलदा है मेरे विच, जो सुनदा है, जो देखदा है, जो समझदा है, जो सोचदा है, जो करदा है, ये शरीर नहीं है, शरीर दे विचों करदा है, ये मैं हाँ। तो आखदा फिर बाद विच वो कहंदा कि तू नहीं है तू शरीर नहीं, तू आ भी नहीं but we'll go to that later. भुगत ज्ञान, भुगत का मतलब हुंदा आनंद मानना। महाराज जी कहंदे जदों आपां नूं बंदगी करके दिसन लगदा कि अंदर परमात्मा वसदा, जो ने कहा सी मैं तेरे अंदर वसदा, वो सच्ची मुच मैनूं दिसदा अंदर वसदा, ते ओदे नाल मिल के जो शांति, जो सुख, जो आराम मिलदा, महाराज जी कहंदे वो खुशियां दिंदा, वो आदमी उन्हों मानदा है, आनंद मानदा है। Maharaj ji says that with his grace and through meditation, when we come to know that yes, the truth in fact does dwell within me, I feel him. And then while staying with him, the peace, the love, the stillness we feel, he says that peace, that love, that stillness one enjoys. भुगत ज्ञान दया भंडारन, तो उस ज्ञान दा भंडारी है, वो सारा ज्ञान दा खजाना परमात्मा दे कोल है। जदों आपां उहनूं अंदर मिलते हाँ तो खजाना ज्ञान दा सारा अपने अंदर आपां नूं दे जांदा। वो कोई दिमाग नाल सोची समझी चीज़ नहीं हुंदी, वो की हुंदा जी, वो चीज़ हंडाई हुंदी, ओदा तजर्बा हुंदा, ठीक है ना। वो जो ज्ञान परमात्मा दिंदा वो दिमाग विच नहीं ख्याल पा दिंदा, वो आपां नूं दिखाउंदा है, आ देखा। ते परमात्मा उस ज्ञान दा खजाना है, ते वो खजाना बन के किन्ने रखिया? दया ने, क्योंकि वो बहुत दयावान है, तो इसलिए वो आपां नूं अपने दया वाले सुभाव विचों खजाना वरताउंदा है। He says the divine is the treasure of that divine knowledge, and because of his merciful nature, he transfers that treasure to us when we unite with him in meditation. And one of the treasures is the celestial music, which is being played
within, everyone, everywhere. ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਲਈ ਕੁੱਖ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ। And one of the blessings he blesses us from his treasure is the realization of the celestial music. Please, ਧਿਆਨ ਕੰਨਾਂ ਵੱਲ, ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਟਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸ ਹੈ। The divine is the treasure of all. We say heavenly treasures. Heaven, poor heaven. Poor heaven. That's not heaven. Heaven is nothing. Poor heaven. It's not from heaven. It's not from Heavenly Father. We cannot put into words the name of his land, the name of his house. ठीक है ना? कुछ भी नहीं किया जा सका। महाराज जी इन्ना ही कहते कि जिथे वो बैठदा ते बैठिया हर एक की जगह, उत्थे की है जिथे महाराज जी बैठते उत्थे की? हाँ जी, थान सुहावा, सुच्चा थां, सब ठीक है। वो ओदी दरगाह है, ओदी दरगाह है। That the true knowledge, the realization of the truth, that gives us peace, stillness, real comfort, real peace, stillness of the consciousness, which can never happen without him. We enjoy that. And one of the blessings out of his treasure is the celestial music. And for this thing, Ades Desai Ades, I bow down to him. Ades Desai Ades, Ades Desai Ades, Ades
say Ades, Ades say Ades, Ades say Ades. हाँ जी, उधर ध्यान रखना जी. Let us please remain focused at the ears. Bring our consciousness at the ears and feel, hear, recognize the celestial music, however feeble it may be heard in the beginning.